Changes like these are very unpredictable. RCI की official website. Keep on watching such videos. Hi everyone, I hope you all are doing good. This video is for people who are aiming to become clinical psychologists. So there is a slight change according to RCI, the Rehabilitation Council of India, जो ये सब rules and regulations बनाती है. तो MPhil by the end of 2025 हट जाएगा. 2026 से सिर्फ MA clinical psychology रहेगा. That will be your specific route to become a licensed clinical psychologist. So let's see what all we have in this video. Let's get started. Starting from the beginning, सबसे पहले MA क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आपको MPhil करना पड़ता था 2 साल का, जिसके बाद आप रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते थे, यानी कि लाइसेंस आपको मिलता था टू ओपन योर ओन क्लिनिक टू प्रैक्टिस. ठीक है, लेकिन अब 2025 के एंड में ये MPhil खत्म हो जाएगा. 2026 से नया कोर्स स्टार्ट होगा, हर कॉलेज में होगा अवेलेबल, MA clinical psychologist, which will be your sole route to become a licensed clinical psychologist. Now इसकी eligibility के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले you need to complete a 4-year, not a 3-year, a 4-year undergraduate program in psychology. It can be BA program, BA in psychology, BSc in psychology from a UGC registered university. Next we have, you must have a 55% of aggregate marks. This is for general caste and 50% for scheduled caste in your undergraduate program. Now जिन लोगों ने 3 साल का undergraduate किया है, either you have to do a bridge course 1 साल का, या फिर 1 साल का masters कर लो with a 55% aggregate marks in your masters first year. इसके बाद यू विल बी एलिजिबल. बेसिकली द क्राइटेरिया इज 12th के बाद 4 साल की साइकोलॉजी में पढ़ाई करनी है. आइदर यू डू 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स, ब्रिज कोर्स में भी, और या फिर तुम 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कर लो. राइट, सो द करंट MPhil फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी will be valid till 2025-2026 academic year. So it's advisory that if you are at all planning to do it, तो उससे पहले complete कर लो, या जो लोग कर रहे हैं, then it will be replaced by MA in clinical psychology, जो आपका sole route होगा to become a licensed clinical psychologist. Changes like these are very unpredictable and they confuse a lot. So it's better you always get updated and keep a check on RCI की official website and keep on watching such videos and you'll be good. So if you like this video, if you find this video informational, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you have any questions, you can write it in the comments. Bye bye.